Department of Indian and Audit Accounts Regional Training Institute and the SGST Department of the Maharashtra. And he also runs a knowledge spreading GST initiative by the name and hashtag of GST with Nihal on various social media platforms. Apart from this, he frequently writes for magazines, journals, and other publications. With this, we hope today we are very much equipped with replying to all the notices and appeals reply. Over to you, sir. Hope we gain much more good deeds today. Thank you, sir. Thank you so much, Rima ma'am, and thank you so much, Jaideep bhai, for once again inviting me to MCTC. This is the second time that I'm addressing the MCTC audience. Chalo, I'll try to share the little experience or knowledge that I have with all of you. Before starting, let me be very honest. It is not going to be a theoretical session because जो मैं मेरी practice में करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ. We may have difference of opinions. I am happy to learn. You can also teach me a couple of things. It's okay. Today I am the speaker. Tomorrow you would be the speaker. So, with this brief background, let me start. अच्छा, वैसे तो usually I don't prepare PPT for this session, but somewhere or the other, I had to prepare this because I had taken this session yesterday at Daisar, today for you all, and tomorrow for Kandivali. So that I don't forget anything, it is better that I keep this PPT only ready. Welcome, and I am sure that as colorful this welcome is, as colorful the session would be. Acha, language of Hindi and English is mixed, comfortable. Yeah, you want purely in English or purely in Hindi? Anything you will do, whatever you are Achha, comfortable. ठीक है, I am comfortable with anything. Certain disclaimers. ठीक है. Now this is my situation. जब भी कोई पर्सन आता है and he tells me about ASMT 10 pre-show cost consultations, show cost consultations, orders, going forward for an appeal. Now please remember one thing, that with great power comes greater responsibility. We are all batting on behalf of the taxpayers. So here we will be discussing अपना taxpayers के पास में क्या power and क्या responsibilities है. What is the great power given to you? To reply to communications. And when I mean communications, it means a communication. Notice नहीं है, फिलहाल आप notice के भी एक level पहले चल रहे हो. So what is your responsibility? To be brief and concise. एक बहुत फेमस केस लॉ है जो प्रीवियस मंथ और उसके प्रीवियस मंथ इट वाज वेरी widely spread on social media. Can anybody give me the name of that case law? Anybody? Safari retreat. Correct. Safari retreats. In that Safari retreat judgment, there was a very good comment that brevity is the hallmark of advocacy. What does that mean? That if you are asked a particular detail, आप प्लीज वो डिटेल पे रहिए, आप प्लीज वहां तक ही रहिए. सेंस नहीं बनता to invoke 2000 other things into a simple notice that has been sent across to you. Now, I don't say that all of us do it. I don't say that we do it in all the cases. But जहां पर भी अपन करते हैं, always ask a question to yourself. क्या मैं इसे अवॉइड कर सकता हूं? अगर आंसर हाँ आता है तो आप प्लीज उसे अवॉइड कीजिए. देयर इज नो नीड टू गिव टू मच ऑफ लॉ टू एनीबॉडी बिकॉज लॉ उनके पास भी सेम है, लॉ आपके पास भी सेम ही है. बी ब्रीफ, बी कंसाइज, बी टू योर पॉइंट एंड बी वेरी बोल्ड अबाउट इट.
इट इज नॉट दैट कि अगर आपने 400 पेज का रिप्लाई दिया है तो ही आप अपना पॉइंट रख पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक समराइज्ड फॉर्म में भी अपना पॉइंट रख सकते हो, बिकॉज वी आर a chamber of tax consultants. I am sure that I am addressing advocates. I am sure I am addressing company secretaries, chartered accountants, GST practitioners as well. Can somebody give me a differentiation between what is a communication, what is a notice, and what is a drafting for an appeal? Somebody. अच्छा, a request to the organizers that previous time भी it was not a one way session, तो इस बार भी नहीं होएगा one way session, तो you will have to be responsive at least. So tell me the difference between communication notice and drafting for an appeal. Drafting for appeal is we are contesting the order, Okay. and communication of notice is we are replying to the legal issues raised by department. Okay. Can anybody give me one example of what is communication and what is the difference between communication and a notice? कम्युनिकेशन आप सबको आया है, आप सबने रिसीव किया है, आप सबके क्लाइंट्स आपके पास में उसे लेकर आए और आपने सीधा सीधा बोला ये पे करना ही पड़ेगा, जबकि मुझे नहीं मालूम आपकी जीएसटी की प्रैक्टिस कितनी है, क्या है, बट मैं कॉन्फिडेंट हूं आप सबने ये सिचुएशन फेस किया, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। बहुत 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 कॉमन है ये, एटलीस्ट फॉर द ईयर 17, 18, 18, 19 के लिए तो कंफर्म आया ही होगा आपके क्लाइंट्स के पास। एनीबडी टेक अ गेस? ओके, ASMT 10 and DRC 01A. DRC 01A, ओके, मैं उससे भी और सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बता देता हूँ। 17, 18, 18, 19 में जब भी आपने रिटर्न्स भरे थे, अगर लेट भरे होंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट वाज नॉट कंपलसरी, एटलीस्ट ऑन द पोर्टल। लीगली इट वाज, पोर्टल अलाउ कर देता था। आई एम श्योर जिसने भी लेट रिटर्न्स भरे होंगे उन सबको बाद में कम्युनिकेशन आया होगा ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल दैट डियर टैक्स पेयर, आपने अपना रिटर्न लेट भरा है, लीगली यू आर सपोज टू पे पेनल्टी। सेक्शन 51 हो सकता है, सेक्शन 53 हो सकता है, वॉट एवर इज द केस, आप प्लीज अपना पेनल्टी इंटरेस्ट पे कर दीजिए। आया है? आई एम श्योर आया होगा। ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिकेशन। आप आगे चलिए। One step व्हाट इज further, अ I would add to this. मुझे हाँ मेरे क्लाइंट को तो ऐसे भी आया, धमकी वाला फोन आया कि वी विल अटैच योर बैंक अकाउंट इफ यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट। सर, मैं फिलहाल लीगल पॉइंट्स पर रहना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये धमकी वाला कॉल वी कैन ऑलवेज टेक ओवर द कॉल। नेक्स्ट, नोटिस। अब नोटिस आपका DRC 01A भी हो सकता है, दैट इज प्री शो कॉज कंसल्टेशन, या उसे आप कम्युनिकेशन के टाइम में भी क्लब कर सकते हो। और जो DRC 01 आता है आपको, दैट इज टेक्निकली नोटिस दैट इज सर्व टू यू। अपील, जो आपका DRC 07 ऑर्डर आता है। इसके अलावा एक और टाइप का आपको डिपार्टमेंट से चिट्ठी आता है, दैट इज कॉल्ड एज समन्स। व्हाट डू यू मीन बाय समन्स? एक कंपल्सरी अटेंडेंस Compulsory of the attendance. tax, Yeah. compulsory
अटेंडेंस ऑफ द टैक्स पेयर। हम में से कितने लोग खुद जाते हैं? like in capacity of a chartered accountant or in capacity of an advocate या in capacity of an authorized representative, अगर हम जाते हैं तो if it is avoidable please avoid, if it is not avoidable तो प्लीज एक चीज समझ लीजिए, समन्स में फैक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं एंड आई कैन, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। समन्स में जो रिकॉर्डिंग होती है वो फैक्ट्स की होती है। अब मान लो जयदीप भाई ने कोई ट्रांजेक्शन किया है और हमारे प्रशांत भाई जा रहे हैं एज एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ऑफिसर ने पूछा क्या आप भाविन भाई को जानते हो? अपियर कौन हो रहा है? प्रशांत भाई। वो या तो हाँ बोलना पड़ेगा या ना बोलना पड़ेगा या क्या आंसर देना पड़ेगा? रुको, मैं इंफॉर्मेशन लेकर आपको बताता हूँ। इंफॉर्मेशन किससे लेनी पड़ेगी? जयदीप भाई से। अगला सवाल, क्या जयदीप भाई ने भाविन भाई के साथ में कुछ ट्रांजेक्शन किया है? आंसर वापस क्या लेना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। किसको? जयदीप भाई को। क्या वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुआ है? वापस पूछना पड़ेगा। किसको? जयदीप भाई को। बाय जयदीप भाई आई मीन द टैक्स पेयर। सो जब आपको सब चीज टैक्स पेयर को ही पूछनी है तो टैक्स पेयर सॉरी जो डिपार्टमेंट है दैट दोज आर रेडी बिकॉज दे नो व्हाट दे वांट टू आस्क। यू डोंट नो व्हाट इज द आंसर टू दैट। व्हाई? बिकॉज चाहे आप ऑडिटर हो, टैक्स ऑडिटर हो, you are a GST compliance person, what is the max extent that you will go? You will check the documents, you will check whether that e-way bill is there or not there. Do you actually check a lorry receipt hai kya nahi hai before availing that ITC? I don't feel so. So whether it has actually been received or not been received, the best person to answer that is the taxpayer only. So it is more appropriate that the taxpayer appears in the summons rather than we all in our professional capacities. हाँ, जयदीप भाई का खुद का ही बिजनेस है एंड इफ इज गोइंग देयर इन द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेसमैन दैट इज ओके बिकॉज देयर he knows in what capacity is he acting. Are they all one and the same? No. So if they are not one and the same, can anybody give a standard reply to all the communications? Answer is no. These are some common reasons why you get a communication from the department. Mismatches hai in form of outward supplies between 1 and 3B, 1 and e-way bill, 2B and 3B, delay in filing, refund cases, ITC. Can anybody give me an example of point number 10, under reporting of turnover? Anybody? So suppressing the sales receipt, sir. Sorry? Suppressing the sales receipt, sir. Suppressing the If we, sales. yes, if we done 10 sale transaction, we are uploading only 80 transactions in GST portal. परफेक्ट। इसका एक सिंपल मीनिंग होता है, अगर मैं इसको आपके कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से देखूं तो आपने जो टर्नओवर है वो 1 में भी रिपोर्ट नहीं किया, आपने अपना टर्नओवर 3B में भी रिपोर्ट नहीं किया, आपने अपना टर्नओवर डायरेक्टली टेबल 4 ऑफ योर GSTR 9 में जाके रिपोर्ट कर दिया। दैट इज टेक्निकली एन अंडर रिपोर्टिंग ऑफ योर टर्नओवर। What is failure to take registration? Legally, Even if the turnover exceeds, the taxpayer is not able, is not willing to take receipt. correct. कितना आगे आवाज नहीं होगी
One example is the turnover exceeded, he has not taken registration. Another example of it can be आपका सेक्शन 24 जहां पर एक लिस्ट दिया है ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू बी टेकन. सिंपल एग्जांपल, आपने एक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, irrespective of the value you are supposed to take registration. Checklist before drafting a reply. This is what I follow in my firm. First, check the validity of the notice, whether it is time barred or not time barred. Can a section 73 notice be issued for financial year 17-18 today on 25th of January 2025 at 11:20 am? Can it be issued? No. Can section 74 be issued today? Notice for 17-18? No. So if that is the case, what is to be done? A simple one liner is to be given that the notice that you have issued to us is time barred. Next, check whether it is issued by the appropriate authority or not. Check whether that appropriate authority has the power to issue that notice as per circular 130 or not. एक circular है, which says that superintendent can issue notices only up to 10 lakhs. So अगर superintendent ने 50 लाख रुपए का notice issue किया है आपको, is it valid? Answer is no. Please raise it at the first go itself, because once you have corporated, you will have to continue that corporation. Verify the DIN if applicable. Do state authorities issue you a notice using a DIN? Answer is no. So if it is not applicable to them. Moving ahead. The Honorable Finance Minister has said that if a DIN is not there, the entire notice is deemed to be invalid. However, in one of the judgments, the Honorable Supreme Court has said that it is okay if the DIN is not there, it is just a procedural lapse. किसकी बात सुनने का? किसकी बात सुनने का? Finance Minister. If a notice is sent to you without a DIN, आप उस पॉइंट को रेस कर दो. Sir, it is not containing a DIN, therefore this is invalid. I don't feel that this communication is appropriate. It is fake. Moving ahead. How to draft a reply. Now these 25 steps are something that I follow personally in my draftings. First, do not write a letter that you would not want to read. अब इसका मीनिंग क्या है? आप प्लीज ऐसा लेटर मत लिखिए जो आप खुद नहीं पढ़ना पसंद करेंगे. मीनिंग, बहुत से ड्राफ्टिंग्स दे आर वेरी अग्रेसिव इन नेचर. जो लैंग्वेज होती है दैट कैन बॉयल एनीवन्स ब्लड. नाउ प्लीज रिमेंबर, you are human, you have emotions. The person reading it is also human, he also has emotions. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका असेसमेंट नहीं कर रहा, इट इज एन इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपका असेसमेंट करने वाला है. सो किसी का खून खौला कर ड्राफ्टिंग देना is something that I don't personally preach or practice. Now that does that mean कि you cannot be bold in your drafting? नहीं, you can be bold. आप बिल्कुल लिखिए पॉइंट कि सर as per me this is my understanding of law. You are allowed to write that, rather you should write that. However, please don't write languages like, sir, you have made an absolute error of a judgment.
This seems to be a reply or a notice that is drafted by an immature person. वैसा language नहीं लिखने का. I personally avoid. You will also. Please. Second, understand the facts or the issues which are there as per firstly the communication, notice, summons or the order. What do you mean by this point? Very simple. आपको एक simple ASMT 10 आया है in which they are saying that Ankit bhai, the turnover reported by you in GSTR1 is 100 rupees. However, in GSTR 3B, the turnover reported by you is 80 rupees. Please explain me the difference between the two of them. Simple ASMT 10 है आपके पास. यहाँ पर your role is limited to explaining the 20 rupees. I have seen draftings जो बोलते हैं सर सेक्शन 37 में स्टेटमेंट इशू करने का पावर है या इशू करना है, हमें फाइल करना है. सेक्शन 39 में हमें रिटर्न भरना है. पता है ना, तो ASMT 10 उसके बारे में कुछ पूछ रहा है ना आपको रिक्वायरमेंट है वो लॉ कोट करने की. क्या पूछा है भाई? 20 रुपए का डिफरेंस समझो. सो प्लीज उसे 20 रुपए का डिफरेंस समझो कि क्रेडिट नोट इशू हुआ था, हम 1 में डालना भूल गए, हम सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट मंथ में विल पुट इट ऑफ. एंड इफ यू कंपेयर बोथ द मंथ्स 1 and 3B, it will match. बस. As I said, brevity has to be the hallmark. So please be very brief. And जितना पूछा है प्लीज उतना ही रिप्लाई दीजिए. लॉ उसके पास है ऑलरेडी. नेक्स्ट, chronologically list down the facts or the issues as per the notice, communications, whatsoever that is there. Now, why do I have to list it down chronologically? It is because if you have to raise a ground like this, that I was not given reasonable time to respond to the notice, this thing will help you. And one of my cases, DRC 01A was issued to me on 18th of July. In that DRC 01A itself, we were told that you have 15 days time to respond to this notice or this communication. Unfortunately, DRC 01 came to our email on 30th of July. 18 तारीख को DRC 01A आया, 30 तारीख को DRC 01 आ गया. अब am I given a reasonable time to respond to that DRC 01A? Answer is no. क्योंकि आपका DRC 01A ही बोल रहा था कि 15 दिन है, 15 दिन में रिस्पॉन्स देना है आपको, और आपने DRC 01 मेरे को भेज दिया 30 तारीख को. सो आपने मेरे को दिन ही 12 दिया. अब ये मुझे कब समझ आएगा? When I have all the facts that are chronologically listed to me. अच्छा, at a lot of times what will happen कि एक DRC 01 आता है आपके पास में या ASMT 10 आता है, उसमें 10 पॉइंट लिस्टेड होते हैं एंड 4 ऑफ देम विच यू कैटेगरिकली एग्री एज वेल. ठीक है, एरर हो गया, विल पे इट ऑफ एंड क्लोज. जैसे आपने आरसीएम का लायबिलिटी नहीं भरा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे, यू आर लाइक एनीवेज रिक्वायर्ड टू बी पेड, सो आई विल पे एंड क्लोज. यू मेड द पेमेंट, यू गॉट इट क्लोज. अभी ये भी फैक्ट आपको व्हेन यू रिप्लाई टू दैट फर्स्ट कम्युनिकेशन या व्हेन यू रिप्लाई टू दैट कम्युनिकेशन, इट हैज टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड सो दैट नेक्स्ट स्टेप जब भी आए आपका, that point is already taken care of. Read the above 2 points at least 1000 times. Literally, मुझे 5-6 टाइम लगता है टू रीड दैट, अंडरस्टैंड इट कि भाई क्या क्या हुआ है पूरे मैटर में. बट आई एम श्योर यू पीपल आर मच मोर एक्सपीरियंस देन मी. आप लोग के लिए 2-3 बार का काम है, बट एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ के वो फैक्ट्स तो लिस्ट डाउन हो जाएंगे हमसे. Pick out the very first communication that you have received from the department. Why?
एंड ये वाई का आंसर जब तक मुझे नहीं आता फ्रॉम द ऑडियंस, आई एम नॉट टेकिंग द सेशन है. वाई इज दैट फर्स्ट कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली अगर आप कम्युनिकेशन देख रहे हो तो आपका रिप्लाई तो इम्प्लाइड है कि आपको चेक करना ही करना है. आंसर. हेलो. To check whether the issues raised in SCN are similar to what is communicated in ASMT 10 and DRC 01A are, or they are different. Okay. But sir, if we have understood the flow, I am talking about that first ASMT 10 or that first DRC 01. ASMT 10 तो छोड़ दीजिए एक बार के लिए. I am talking about that very first DRC 01A only. I have not even gone to show cause as of now. मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ आपसे. Anybody, any guess? Okay. No guesses. Very strange. The answer to that first communication is here. अगर आज आपको पता चलता है कि यार सुप्रिटेंडेंट के पास में तो नोटिस इशू करने का पावर ही नहीं था और आपने DRC 01A को पूरी तरीके से कंप्लाई कर लिया, एट द स्टेज ऑफ अपील आप ये पॉइंट रेज नहीं कर सकते. आज आपको मालूम पड़ता है यार दिस वाज ऑलरेडी टाइम बार्ड, दिस वाज नॉट व्हाट आई कैन से अ थिंग दैट दे कैन लीगली डिमांड फ्रॉम मी. एक बार अगर कंप्लाई कर दिया टू दैट थिंग, then you will also become bound somewhere or the other. But if you have raised it in the first go itself, that is your savior. That is the reason जो फर्स्ट कम्युनिकेशन आता है टू यू और जो आप उसका रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज वेरी क्रूशियल. कैन एन ऑडिट कमिश्नरेट adjudicate a matter? Yes, no. डिपार्टमेंटल ऑडिट सबने हैंडल की है ना? आई एम श्योर की होगी. कैन ही एडजुडिकेट? आंसर इज नो. The max that he can do is he can issue you a DRC 01 or DRC 01A. उसके ऊपर he cannot go. Understand the type of communication. Whether it is a notice, it is a communication for audit, it is a show cause, or it is a summon that is there before you. Please understand, because the response to all of it will differ. Yesterday, I was asked a very good question. Can an audit notice be issued for financial year 17-18 today? Can it be issued today? No. No. The answer is very simple, no. Reason being, the conclusion of audit will either result into a 73 or a 74 or search Caesar raid, etc. things. So 73 is also time barred for 17-18.
74 is also time barred for 17-18. करके क्या होएगा? कुछ नहीं. However, if you get a combined audit notice of starting from 17-18 to year 23-24, can that be issued today? Yes, notice can be issued. However, what reply are you bound to give legally? Should you give details of section 73? Financial year 17-18? Would you give details of financial year 17-18 and financial year 18-19? No. Answer is no. You will not give details. Why? Because आप कंक्लूड कर ही नहीं पाओगे वो चीज को. ठीक है, डेटा तो दे, अगर इफ वी आर ऑफ वन ऑफ दोज अंडरस्टैंडिंग के डेटा दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. However, if some mischief is taken or if some mischief is done, problems can arise. What can a mischief be done? What is section 76? Tax collected but not paid to the government. If something of that sort is anyhow alleged by the department that आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में टैक्स कलेक्ट तो किया था बट हमें पे नहीं किया, तो प्लीज एक चीज याद रखना, 76 के लिए टाइमलाइन तो नहीं है. तो अगर आपके पास में 76 के लिए टाइमलाइन नहीं है और 17-18 में इफ द डिपार्टमेंट टेल्स यू you have collected tax but you have not paid it to us, then proceedings under 76 can go on. However, if an audit notice is issued pursuant to an audit notice, 76 cannot be opened. Please keep this thing in your mind. Summons I believe I have already spoken, so I will not take more of time. Dissect the same word by word, amount by amount and table by table. आपको अमाउंट कैसे डिराइव हुआ है वो भी समझना पड़ेगा. आई एम श्योर सर्विस टैक्स लिटिगेशन में एक वैल्यूएशन एस्पेक्ट का, एक टर्नओवर एस्पेक्ट का बहुत कॉमन सा चीज था जो सबने फेस किया ही होगा. एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ अंडर द सर्विस टैक्स रिजीम. वहां पर दे हैड द डिपार्टमेंट हैज द टर्नओवर ऑफ 1 ईयर, से फाइनेंशियल ईयर 14-15. 15-16 का डेटा उनके पास में नहीं है. सो वो क्या करते थे, अज्यूमिंग फाइनेंशियल ईयर 14-15 का डेटा इज 100, 15-16 का टर्नओवर वाज ऑटोमेटिकली 1.5 टाइम्स ऑफ 14-15. सो ये आपको अमाउंट कैसे डिराइव हुआ है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, तो ये एक अच्छा रिप्लाई बन सकता है. नाउ वी ऑल नो दैट इफ I am earning say 10 lakh rupees in one financial year, there is very less chance that next year I will end up earning 15 lakh rupees. Windfall things can happen any point of time, वो किसी को नहीं पता रहता. But to say it with a conviction and to put it down in the notice, नहीं आपका 1.5 टाइम्स तो टर्नओवर हो ही गया है, वो डिनाई करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ऑन रिकॉर्ड चाहिएगा. सो फर्स्टली वो अमाउंट आया कैसे, दैट विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेबल बाय टेबल. इफ एनी एलिमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड, प्लीज रेज इट इमीडिएटली. व्हाट कैन गो मिसिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड? जैसे वी आर रिसीव्ड ए शो कॉज स्टेटिंग कि आपका टर्नओवर नहीं था, the quantum of your flats remaining unsold, it was for a construction sector. You had prepared 100 flats
out of which 80 were sold and 20 were unsold. We were not given any details कि वो 20 का एरिया क्या था कैसा नहीं था. It was just a calculation that they had done basis their data, records, statements, their inquiries on the ground. We had no idea absolutely as to what was it, and we were told to respond to that notice. If you are in a situation, what is the first thing that you will ask from the department? Because आपको बोला है कि ये कौन से 20 यूनिट्स थे जो अनसोल्ड थे और ये कारपेट एरिया है, and you are told to respond to that show cause. How will you respond? What I did was, I asked them, sir, we have received your show cause. However, we are not understanding कि ये आपका जो ये इतना कारपेट एरिया अनसोल्ड रहा है वो सर डिराइव कैसे होगा. आप प्लीज इसका सपोर्टिंग भेज दीजिए हमको. सर विच इज द फ्लैट दैट वाज अनसोल्ड, what is the carpet area of that flat, and so on and henceforth. So if you don't know the details basis on which they have come out with the notice, ask, feel free to ask. To my experience of with the department, they give out those details. Okay, this is the basis on which we have done that calculation, and once we asked them, they gave out the details as well. So it is not that if you ask them, they'll say हमको नहीं मालूम, हमको कुछ मिला हमने कर दिया. ऐसा response at least I have not faced as of now in my career. So please raise it immediately. Next, roughly list down the topics, sections, rules, notifications, circulars, case laws that you feel may be important for you to reply to that notice or communication. What is a topic? आईटीसी से रिलेटेड नोटिस है या वैल्यूएशन से रिलेटेड है? अंडरस्टैंड दैट थिंग फर्स्ट. सेक्शन, वेदर सेक्शन 16(2) में नोटिस इश्यू हुआ है या सेक्शन 16(4) का नोटिस इश्यू हुआ है. रूल्स, which rule is it hitting? An interplay of section and rules will also help you somewhere. Achha. How many of you feel form GSTR 9C is an integral part of form GSTR 9? If you want, you can answer in chat box as well. How many of you feel? That form GSTR 9C is an integral part of form 9. Yes, yes, yes. Okay. And how many of us has derived this understanding from day before yesterday's late fee waiver notification? Why I tell you, why this question is raised, I'll tell you. If you read out section 44, it tells you that an annual return has to be filed or an annual statement has to be filed. If you read out the rules, they will tell you that an annual return is in form GSTR 9. Go ahead, read out the late fee provisions. The late fee is for filing of GSTR 9. To my experience of
reading penalty as well as late fee provisions, it has to be read in a very strict manner. Very strict manner. If it says 9, it is 9. If it says 1, it is 1. If it says 3B, it is 3B. That is how my understanding or my reading of the late fee or penalty provisions is. Now, if you combine all of it together and read it, a logical interpretation or a normal interpretation would be, ठीक है, 9 is different, 9C is different. However, as personal interpretation, to treat a reconciliation statement as a part of that main report and to levy equal penalty on it or equal late fee on it is something that I personally don't agree to. Moving ahead, जिसने भी ऑडिट्स हैंडल किए उन सबको पता होगा कि अगर आप पे 9C एप्लीकेबल था और आपने 9 भर दिया था, 9C नहीं भरने के लिए वो आप पे सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी लगा रहे थे, 25 + 25 50,000 का। 9C नहीं फाइल करने के लिए 9 की लेट फी अप्लाई कर, वो भी नहीं कर रहे थे। However, pursuant to that notification, what I can say, notorious interpretation has now arisen that 9C was an integral part of 9. Now, if somebody is of that point of view, that sir या निहाल 9C भरना ऑप्शनल है for turnover for clients that are not exceeding a particular turnover, so उनके लिए it is optional और जिसके लिए नहीं है उनके लिए it becomes compulsory. तो I respectfully disagree to that stand for a very simple reason कि turnover can never determine the legal binding of a firm. If you tell me कि नहीं 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए it is compulsory because basis a turnover it is told कि नहीं आप भरो, and 5 करोड़ के नीचे के लिए it is optional, basis the turnover it is told कि आप मत भरो. So एक पार्टी के लिए it is integral part, एक पार्टी के लिए it is not an integral part. I don't agree to this interpretation personally. You can have a different opinion, respectfully agree to that. I hope I have made myself clear कि बहुत सी बार आपके सेक्शन में और रूल्स में और अलग सेक्शन में भी आपको 3 मीनिंग आ सकते हैं. सो अगर वैसा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आपके नोटिस में या आपके ऑर्डर में आ गया है, आप अपना पॉइंट क्लियरली रख लो. एक और एग्जांपल लेता हूं सेम चीज पे. वी आर रफली लिस्टिंग डाउन द सेक्शन नोटिफिकेशंस रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू अस. कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्पेसिफिक हुआ 1/4/2019 के बाद, दैट इज आफ्टर 1/4/2019, one of the taxpayers utilized the balance of ITC that was available as on 31/3/2019 for payment of taxes. Is it valid? Is it wrong? और सर और या निहाल इट डिपेंड्स कि वेदर वो जो नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से तुमने सारी कंडीशन सेटिस्फाई किए या नहीं किए. डिपेंड वाला पार्ट मैं निकाल देता हूँ. नोटिफिकेशन 3, 4, 5, 6 जो भी एप्लीकेबल थी वो केस में, वो सारी की सारी कंडीशंस वर फुलफिल्ड. नाउ द क्वेश्चन इज बैक टू योर. मैंने आईटीसी यूटिलाइज किया
in the month of May 2019, whether this utilization is appropriate or inappropriate. Chat box में you can answer. Not appropriate. Okay. Jay sir says it is not appropriate. Okay. If you feel it is not appropriate, I again tend to disagree, because personally, I have fought an appeal. I have got a favorable order. All the conditions of that notification 3, 4 were completely followed. It was an ongoing project. टैक्स बाद में भी 12% 8% लग रहा था, ठीक लग रहा था, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, आप बाद में भी ले सकते थे. 1% 5% टैक्स was being levied. Moving ahead, जितनी भी properties were booked before that transition in pro rata basis or on a pro rata basis, we had fought with the department agreed that yes, आप यूटिलाइज तो कर सकते थे, फ्रेश अवेलमेंट की मैं बात नहीं कर रहा. बैलेंस 31/3/2019 को पड़ा था आपके क्रेडिट लेजर में, आप वही यूटिलाइज कर रहे हो सिर्फ. यू आर नॉट अवेलिंग एनीथिंग अफ्रेश. I hope with these two sections, yeah, with these two examples, noting down is important. Move to case laws. How many of us feel that case laws have to be quoted in a reply that I give? हमेशा, हर एक पॉइंट के लिए. Anybody of us of that opinion or of that understanding? केस लॉ कोट कर देना चाहिए हमको, so that हमारा पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है. Should be quoted. Should be quoted. Okay. Prashant bhai said should not be quoted. Chetan bhai says it should be quoted. Very good. Usually what I follow is, I will not quote it in DRC 01A. I will not quote it in DRC 01 as well. Commissioner appeals. I will quote it only and only and only and only if there is no contrary case law available that cuts off my decision. Otherwise, I will not quote it. For a very simple reason. At DRC 01A, you go to the officer, you present a case law, no problem. He will take it and put it aside. नहीं सुनना. 01 में जाओ, you present it to the best of your abilities. He will say नहीं सुनना. Or if the officer has worked across, what he'll do is, he says ठीक है, this is your favorable judgment, this is my favorable judgment, हो गया दोनों का negation 0, net effect is 0. Last में we'll end up saying sir, it's okay sir, you take your legal call, we'll take our legal call. So if that is a thing that we're going to say at the end, if he gets out a contrary case law, it's better to avoid it. Next question. Somebody in the initial stage said, Safari retreats, landmark judgment. Is that judgment quotable? Question mark. Or rather, should you quote that judgment in the first place? Facts are same, absolutely same. Your client has constructed a building, he will give it out for rent. You have availed ITC. Will you take shelter of Safari retreats?
If department is Oh. going into appeal, we should not. Okay. No. 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 Can anybody tell me why? I will not take that shelter of that judgment. I'll give you my reasoning as well, but अगर कुछ आपसे आ जाए तो it will add more to me as well. The कल महावीर decision नगर is गांधीवाली वालों को बताने में काम the decision is left upon the High Yes, Court. Sandeep. High Court will send it to the adjudicating authority. Perfect. If we have gone through that judgment, it is a perfect example of the very famous Hindu quote. It is a Narova Kunjova. The Supreme Court has not decided whether that particular building is a plant or it may satisfy the meaning of that plant or machinery whatsoever. What it has done, it has remanded the matter back to the Odisha High Court, asking it to determine whether it is plant or machinery. So if the Honorable Supreme Court has not decided on that matter, in fact, even if your fact is 100% same, personally, I will not quote it. Why? Because there is no end to that thing. And if it has not ended, the matter is still open. Anything that is open, the best approach to do is not to touch it. Let the honorable courts first come up with their complete understanding of the thing, and then we can do. Then we should decide whether we should use it or we should avoid it. बहुत सी बार क्या होता है, a particular case law is there. Para 4.1 is in favor of Dilip sir. However, para 4.3, 4, 5, 6 is all in the opposite direction. Should you quote para 4.1? No. No. Answer is no. Please don't quote it. For a very simple reason. Any case law that is there, see, please understand one thing, that has to be read in totality. Just because one point is in your favor, please don't pick it up and put it down in your communications. Not advisable. I don't follow this practice for a very simple reason. वही जजमेंट का अगर सेम पॉइंट मेरे नेगेटिव जाता है, that quoting of that judgment is absolutely an unwanted thing to do. Rather than helping me put my point, it helps the other party to justify their point. And if we are representing taxpayers, the best thing to do is that we should be only quoting up those points that are favorable to the taxpayers. If you are litigating from the department's point of view, use it. But I don't feel anybody of us is currently handling litigations from the department's perspective. Anyways. The next important thing is, should you quote the entire section or just the relevant part? Better to quote entire section. Better along to with quote the the rule entire. also. Along with the rule as well. Along with the Ashwin rule sir, also. your drafting will go very long then. But section should be quoted in full. Section should be quoted in full, relevant part. Now see, this is a very tricky situation to be in. Why? I'll ask you a very simple question, okay? Is section 76 independent enough to start proceedings as well as to conclude it? Answer is yes. If you get a case wherein an order was issued under section 76, order 76 subsection 2 specific. However, while adjudicating, the adjudicating authority
by chance, by error, or by lack of knowledge. Started proceedings under section 73, stating that you have received a show cause under section 76, and now I am passing an order under section 73. Is this transfer possible? Answer is no. So if you cannot transfer from one section to another section, in such cases I'll always say आप पूरा का पूरा सेक्शन कोट करो, अश्विन भाई आप रूल भी कोट करो पूरे के पूरे, सो दैट आप ये चीज प्रूव कर पाओ सर ट्रांसफर करने का पावर किधर है आपके पास. However, अगर आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है दैट वेदर दैट मैटर फॉल्स इन फ्रॉड केसेस और नॉन फ्रॉड केसेस, आप सिर्फ सेक्शन 73(1) और सेक्शन 74(1) भी कोट करोगे, हो गया, योर वर्क इज डन. सो इट डिपेंड्स. अगर आपको पूरा का पूरा सेक्शन चैलेंज करना है या सेक्शन का पावर चैलेंज करना है, जब तो आपको पूरा का पूरा सेक्शन उठाकर कोट करना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस. हाउएवर, अगर आपको सिर्फ वो रेलेवेंट पार्ट ही उठाने हैं बिकॉज आपको मालूम है दैट आई एम नॉट चैलेंजिंग द पावर ऑफ द सेक्शन, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सर ये सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन है जहां से आपको गाइडेंस आ जानी चाहिए, तो आप रेलेवेंट पार्ट उठाकर लिखो, चलेगा. इसका एक एग्जांपल, सेक्शन 73 की नोटिस 73 का ऑर्डर, अगर इन दोनों में ही कुछ मिसमैच आ रहा है तो आप सिर्फ नोटिस का सेक्शन और ऑर्डर का सेक्शन इफ यू कोट इट, द मैटर इज डन. यू डोंट हैव टू कोट द एंटायर 73. आई होप आई एम क्लियर. इसका तो यस नो लिख दो. Sir, ओके. hello. यस सर. हेलो. Sir, whether it is where one of my client I have received one notice in the under section 73, 73, 3 and 2. After that, they issue the DR. After they issue the so order in 73, 9. Whether it is valid or not. Appropriate only, sir. What is the mischief that we are looking at? Block, unblock e-way bills, something. Para 11. We have not filed the consecutive 2 monthly returns of my clients, so that's why they issue the block, unblock e-way bill. Okay. Click. Then once you file those returns, that blocking and all should ideally be done. That unblocking should be done ideally. Anyways, if it is possible and if you are comfortable, share that notices with me if you are comfortable doing it. No problem, sir. No issue. Prepare the first draft of your reply. Now, after understanding this much, or after spending like 2 to 3 hours on a particular notice, is when I actually start preparing my first draft. Prepare it and read it. To my experience, the first draft that we prepare and the final draft that we actually submit, there is lots of differences. Why? Two major reasons. Whenever we sit and draft for the very first time, be it any notice, what we try to do is in our head and on the notice, I have to write this, 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 I have to write this. अपन है ना सिर्फ उसका एक synopsis prepare करते हैं बस. Once that synopsis is ready, we start writing things. And once we are writing things,
we understand that this is missing from our end. For example, we were supposed to prepare we were supposed to prepare a reconciliation so that our fact is betterly presented. Missing. Please prepare it. Para number 4 of the notice writes down an amount as 1 lakh. However, para number 9 of the same notice reduces that amount to 50,000. So your dispute is only of 50,000. So 50,000 का जो भी आपको explanation देना है, it can be in form of reconciliation, it can be in form of submission of invoices, whatever it is. आप एक बना के रख लीजिए at that point of time only. A lot of people handles their litigation in a manner that they will not give everything in the first go. They are like, ये डॉक्यूमेंटेशन में आज सबमिट कर देता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन में आज सबमिट कर देता हूँ. However, this is the explanation that I will do when a PH is issued to me. So अगर आपको वो भी करना है, appropriate your strategy to make. However, आपको जो PH में भी बोलना है ना, वो भी आप प्लीज उसी पॉइंट पे प्रिपेयर करके रख लीजिए. ये तो जो फाइल का नाम है आप उसको लिख दीजिए. ये तो जो फाइल का नाम है आप उसको लिख दीजिए. थिंग्स टू बी स्पोकन एट द टाइम ऑफ PH. बस. So that you are ready in all aspects at all point of times. आज ही 2019 में जो अपील फाइल की थी उसकी हियरिंग आई 2024 में. इतना टाइम बाद में अगर आपको हियरिंग आ रही है या PH आ रही है, so please note it will take a good amount of time for you also to understand कि उस टाइम पे क्या आपने लिखा था, क्या बैकिंग था, क्या सपोर्टिंग था. So if something is missing from your end, आप प्लीज उसे इमीडिएटली बना लीजिए. प्रेजेंट करना नहीं करना, whether to give it to the department now or to give it to the department later is completely your litigation strategy. But document तो बनाकर रख लीजिए. No. जब भी हम स्टूडेंट्स थे, हमें कोई पर्टिकुलर अगर केस स्टडी आती थी तो we were told to answer in a particular manner. What was that? That will first list down the facts, then you will list down the appropriate sections that are applicable. आंसर उधर खत्म नहीं होता था. उसके बाद में आप दोनों का कोरिलेशन करते थे. और जब आप लिटिगेशन कर रहे हो तब भी आप लिख तो लेटर ही रहे हो. कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई टेल यू. आपने ये चीज कम्युनिकेशन में लिखा, सर सेक्शन 16(2) हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन सेक्शन 16(4). लीगल इलीगल छोड़ो, आपका ग्राउंड है. ये पॉइंट सच है गलत है साइड में रखो, आपका ग्राउंड है. तो अब आपको सेक्शन 16(2) क्यों ओवरराइड कर रहा है वो तो पूरा का पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा. सिर्फ जस्टिफिकेशन उसका देकर खत्म होगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि 16(2) की कुछ कंडीशंस भी है ना. अब आपको वो भी तो लिखना पड़ेगा कि मैंने 16(2) की सारी कंडीशंस फुलफिल की है. कंपेयर इट विथ माय केस. सर आई हैव द इनवॉइस, I have the goods are actually received, the returns are filed, tax is paid to the government. No, when you compare it, it is at that point of time that what you are trying to tell, सर मैंने मेरा पूरा काम किया है. अब सामने वाले ने अगर रिटर्न लेट भरा तो मैं क्या करूं? मेरे पे 16(4) क्यों इन्वोक कर रहे हो आप? Prepare it, correlate it with your facts and sections and rules. Now read the second draft. You will feel it is better than the first. Now what I personally say,
case clause and citations, I believe we have had enough discussion on it, but please add them only and only if you feel it is the thing that will make your case the strongest. GEST, not strong, strongest. Alternatively, you know कि मैंने अगर से एक पर्टिकुलर जजमेंट कोट किया, सामने से मेरे को क्या जजमेंट आने वाला है, और मुझे मालूम है कि ये जजमेंट जो सामने से आएगा, why is it not binding on my case? If you are completely through that chain, कोट कर लीजिए. Personally, I avoid it, but again, आपका litigation strategy, you are the best person to take a call. What I personally feel कि ये जो हम लिटिगेशन करते हैं या जो भी हम कम्युनिकेशन आता है या कम्युनिकेशन जाता है, ये और जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट इज वन एंड द सेम थिंग. गार्बेज इन, गार्बेज आउट. नो, आई बाय गार्बेज आई डोंट मीन के कचरा है वो. जस्ट दैट एक पर्टिकुलर सेट का डेटा आपके पास आएगा, पर्टिकुलर नोटिस आपके पास आएगा, उसमें 10 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट होंगे, वट एवर इज द केस. आप वो 10 पॉइंट को, 5 पॉइंट को, 2 पॉइंट को, वट एवर इज द केस, आप प्रोसेस करके उनको दे देंगे. बट एक चीज याद रखना, आपको क्या पॉइंट आता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. हाउएवर, आप उस पॉइंट का क्या रिप्लाई करते हो वो जरूर आपके कंट्रोल में है. फॉर एग्जाम्पल, एक विरार का एरिया है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का केस है. विरार के एरिया में पार्किंग का जो स्लॉट है वो बिका है 5 लाख रुपए में. ऐसा एक क्लाइंट को शोकॉज आया है. अब पहली बात तो जब वो 5 लाख का मैंने वैल्यूएशन देखा, आई वो शॉक्ड. मैं बोला विरार के एरिया में 5 लाख में पार्किंग बिक रहा है. तो मैं बोला फिर जयदीप भाई अगर आज मिलेंगे मुझे तो मैं उनको पूछ ही लेता हूँ, या अश्विन भाई भी मुझे बता पाएंगे, सर मलाड में पार्किंग कितने में बिकता है. We were shocked at the valuation that was done. However, one thing is for sure, that builder as such cannot collect any amount in the name of parking charges. That is law. So if somebody faces a question कि आपने 5 लाख रुपए में वैल्यूएशन पार्किंग नहीं बेचा, कोई बात नहीं, आपने कितने में बेचा आप मुझे बता दो. And if going by the records and documents you are firmly on your stand, sir, parking is not sold, and if the officer says it's okay, if you feel it is not sold, okay, I will do a market survey of your area, I will add any abrupt percentages to that, and then I'll come to that valuation. शो कॉज मैं आपको इश्यू करूंगा. What will your answer be to that question? The answer is very simple, sir. The max वैल्यूएशन जो आप कर भी सकते हो मेरे लिए, वो मेरी कॉस्ट प्लस 10% होगी. क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट एरिया का वैल्यूएशन लोगे मेरे लिए तो कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. बिल्डर और फ्लैट बायर क्या आपस में रिलेटेड पार्टी होते हैं? नहीं. क्या आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं? नहीं. सो मार्केट वैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो मेरे लिए, सर ग्राउंड नहीं बचता. माय रीडिंग ऑफ लॉ. सो ही कैन गो अहेड एंड ही कैन डू मार्केट वैल्यूएशन. अग्रीड. वो आपके पास में नोटिस आ गया. नाउ योर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड.
in a way that you are saying that, sir, it is not the market valuation. This is my cost. Support it with whatever documents that you have on records. On records. Please understand what is the mindset of the signatory or the signing authority. I'm sure a lot of times we have faced answers like this. अश्विन भाई, आपको जो रिप्रेजेंटेशन देना है आप दे दो, आई एम अंडर एन ऑर्डर के नेगेटिव ऑर्डर ही पास करना है. इट कैन बी सुपरिटेंडेंट, इट कैन बी एसी. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दे आर वर्किंग अंडर अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. सो अगर उनको उनके सुपीरियर ने बोला है कि नेगेटिव ऑर्डर बनाना है, तो वो एक्सीड नहीं करेंगे अपने पावर को, वो नेगेटिव ऑर्डर ही बनेंगे. चाहे आप फैक्ट लाओ, चाहे आप लॉ लाओ, आपको जो लाना है आप लेके आ जाओ, वो ऑर्डर तो नेगेटिव बनने वाला है. सो इफ यू आर वेरी श्योर ना कि भाई द सिग्नेटरी or the authority will pass a negative order only against me, as a litigation person I feel that I am in the best position. क्यों? मैं उसको कुछ भी दूंगा, जो भी दूंगा वो कंसिडर तो करेगा नहीं. So it is at that point of time that I will give absolutely all the things that I want to give, so that at the higher stage I can tell, sir, मैंने तो सब कुछ दिया था, your officer did not consider. I hope I am making sense. So please understand one thing, what to receive in show cause, what to receive in communication, what to receive in orders is not in your control. However, how you respond to them is. And if the signatory is already of that mindset that I cannot do anything, I am working under an order, नेगेटिव ऑर्डर ही जाना है, तो वो नेगेटिव ऑर्डर ही आने वाला है, फिर चाहे कोई भी जाए. Am I clear? Yes, no? Next, please be crystal clear in your communications. आपको जो पॉइंट लिखना है, जो पॉइंट रेस करना है, आप प्लीज क्लियरली रेस कीजिए, क्लियरली लिख दीजिए. लैंग्वेज, Sir, sorry. ओके. Sir, यस सर. for parking garage, builders are giving only letter. हाँ, Now sometimes they are also getting registered. ओके, So it is attached with my, I have paid extra money, it is attached and everything. And I करेक्ट, have paid stamp duty registration also. But in many cases, they are just giving letter. ओके. So in that case, how to fight, sir? Because if I get registered, automatically valuation will come in my hand or signatory hand. Correct. Sir, if that is the case, if the builder is allotting parking spaces to you, then for sure the builder has collected something from you. You can defend the valuations that are done, but then you don't have a ground that मैंने कुछ पे नहीं किया है. I agree. I paid a white money, no issue. So if you have paid white money, the builder should have discharged his liability. But my point is, once it is registered, the valuation will definitely come in the signatory hand only. Okay, but the tax is not supposed to be paid directly to the government by the signatory. It is supposed to be paid by the signatory to the builder, and then the builder has to pay to the government, because supplier is the builder. I am the recipient. Say for example, you are the builder, I have purchased parking from you, so you will charge GST to me, and then you will pay to the government. And what about the transfer once you sell everything flat in garage and everything to another person?
Sir, in that case, it is an immovable property that is being sold. Okay. I got it, sir. Got it. Got it. Next. Please get your work reviewed. I still get my work reviewed. So nothing like अगर आपने उसको रिव्यू के लिए दे दिया तो आपका क्लाइंट एक्सपोज हो जाएगा या ऐसा कुछ. इफ़ यू आर वरीड अबाउट इट, नो प्रॉब्लम. आप अपना नाम छुपा दीजिए, आप अपने क्लाइंट का नाम छुपा दीजिए, आप सिर्फ जो ग्राउंड्स एलिगेशंस है आप वो दे दीजिए और जो आपने ड्राफ्टिंग किया है वो दे दीजिए, इफ़ यू आर वरीड अबाउट इट. बट always get it reviewed for a very simple reason. Now, I might have a different thought process altogether to read things. Ashwin bhai might have a different thought process altogether to evaluate things. We don't know. Okay, the person who is adjudicating will agree to my thoughts or will agree to Ashwin bhai thoughts. What is the thing Not to my do? point. Not my point, sir. I understand. अरे नहीं ना sir. I understand their mentality, sir. The thing is, he will add one point. Once that point is added, you get a new thought process as well. Okay, acha, the law can also be read like this. So once you get that, okay, the law can also be read like this. Please understand, you are not in your shoes. You are in somebody else's shoes. And once you are in somebody else's shoes, जो भी attachment होता है, detachment होता है to that thing, that everything goes away. Now you are like, अच्छा, this is the fact ना. आपने ये लिखा है, okay. अच्छा, can I also say that 9 is not an integral part of 9? I might feel so. You might feel otherwise. Just an example. So I will give you explanations as to why it is not an integral part. Now you will come up with explanations as to why it is an integral part. So if it is not reviewed, good possibility that a thing that should have been quoted, either we miss it, or once we get it reviewed, we get that confidence कि नहीं everything is complete only. इसके आगे, as on the present day of law, I could have not quoted anything. जैसे फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 तक कभी भी अगर 16/4 के अगेंस्ट आपने अपील फाइल की होगी, सबने एक ही कोटेशन किया होगा ना, सर 16/2 starts with notwithstanding, 16/4 does not start with notwithstanding, therefore 16/2 is an overriding section over 16/4. But once that 16/5 came in, okay, so 21, 22 तक तो आप सबने यही ड्राफ्टिंग की होगी, कुछ नया तो होगा नहीं. बट वंस दैट 16/5 केम इन, किसी का दिमाग चला क्या कि काम करते ना यार, ये वाली ड्राफ्टिंग तो जो गई है वो गई है, अभी 16/5 आ गया, एक काम करता हूँ, एक लेटर लिखता हूँ टू द कमिश्नर अपील्स दैट सर नाउ सेक्शन 16/5 इज देयर इन प्लेस, देयरफॉर जो मैंने पुराना जो ड्राफ्ट किया था ना, आई वांट टू अमेंड दैट एंड आई जस्ट वांट टू प्लेस सेक्शन 16/5 बिफोर यू ऑन रिकॉर्ड्स. जब आप तब ड्राफ्ट कर रहे थे, प्लीज नोट 16/5 था नहीं तो कोट नहीं किया है, ऑब्वियस है वो. बट वंस समथिंग इज अमेंडेड, डू वी टेक केयर कि नहीं नहीं यार अभी ये हुआ है ना, अभी 16/5 आ गया है, लेट मी नाउ पुट इट और अप्रोच इट दैट वे. अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जांपल बोलता हूँ आपको. वन ऑफ द अपील्स डिविजन्स, they have told me very categorically, Nihal, whosoever has quoted these things na, कि सर सेक्शन 16/2 is overriding, ऐसा ऐसा ऐसा, I have all the things on record and section 16/4 is under section 16/2, बोलते I will get all of them, bring me everything now. मैं उन सब से इनवॉइसेस मंगाऊंगा, मैं उन सब से डॉक्यूमेंटेशन मंगाऊंगा, सब कुछ मंगाऊंगा, and only if everything is there I'll approve them. बोला बट सर दिस इज बियॉन्ड what the law says prescribes, right?
He's like, absolutely. This is beyond my authority as well, but I will still do it. For a very simple reason. A lot of times जो प्रेयर हम करते हैं उसमें हम ये पॉइंट भी नहीं लिखते कि सर प्लीज लेट मी अमेंड माय सबमिशंस. तो बोलेगा ऐसा ड्राफ्टिंग पढ़ा है क्या निहाल? हम मैंने देखा है इसके लिए बोल रहा हूँ. So please get your work reviewed. It will help you in the longest of the longest run. Now what to do next? Review भी हो गया, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने देख लिया या दो एडवोकेट्स ने देख लिया. अब किसके जैसा सोचने का? डिपार्टमेंट के जैसा. Now think from the department's perspective. If you are the adjudicating authority और निहाल का ड्राफ्टिंग आपके सामने आया है, क्वेश्चंस क्या पूछोगे? इसके अलावा कुछ पूछ सकते हो क्या? For example, in one of the notices that we are currently facing, we are asked a question whether the agreement that you have registered, whether it is at stamp duty at the reckoner rate, above the reckoner rate or below the reckoner rate, and it is a GST proceedings, mind you, it is not an income tax proceedings. Obviously, GST officer has got nothing to do with what valuation I've got my agreements registered. It is the purview of the income tax officer to look into it. But then still, if he's asking us, he can ask anything. You have to be prepared. That sir, it is the income tax purview. I hope I have made myself clear. Improvise and then your final draft is ready. 23 and 24 is very crucial to understand. Difference of legal interpretations between professionals. Like I am of a firm view. 9C is not an integral part of 9. Therefore, no penalty, no late fee was ever prescribed for 9C. So आपको जनरल पेनल्टी मारना है 50,000 का, I agree to that. But as such, late fee for 9 cannot be called as late fee for 9C. मेरा view है. When I asked it in the audience, a lot of you said yes, it is an integral part of 9. You and me can have a difference of opinion. Absolutely okay. We both can learn. We both, for our lives, can stay on that different grounds as well. Absolutely okay. No problems whatsoever. But if you and the department is having a difference of opinion or a difference of interpretation, it is at that point of time that you have to take up a one very strong legal call. Sir, my stand is this. I stand firmly on what my grounds are. If you don't agree to it, you can take your legal course. I am of this belief. I will take my legal course. This is something that as consultants or as any person who is drafting up any simple letter, he has to somewhere or the other come to that ground. Okay, sir. You don't agree to what I say. I don't agree to what you say. Difference of views, difference of opinions. आप मुझे प्लीज शो कॉज या ऑर्डर इशू कर दीजिए. I'll give my replies to that. Again, as I said in the first word, please do not write a letter that you would not want to read. Both हो गया. What are the things to do? What are the things to do? What are the things to do? Now let us also understand what is not to be done. Template practice. निहाल भाई, ड्राफ्ट है क्या 2A वर्सेस 3B मिसमैच का? नहीं है. क्यों? क्योंकि 2A वर्सेस 3B मिसमैच सिर्फ एक कारण से हो सकता है क्या? नहीं, बहुत कारण से हो सकता है. दो तो मैं बता देता हूँ. पहला, सामने वाले ने B2B के बदले B2C में डाल दिया. 2A वर्सेस 3B मिसमैच. दूसरा, सामने वाले ने डिस्क्लोज ही नहीं किया. 2A वर्सेस 3B मिसमैच. अब मान लो मेरा फैक्ट जो था मेरे क्लाइंट का वो था सामने वाले ने डिस्क्लोज ही नहीं किया ऑल टुगेदर. आपका फैक्ट है B2B के बदले B2C में डाल दिया. मैंने आपको मेरी टेम्पलेट उठा के दे दी.
आपने भी टेम्पलेट उठाकर फाइल कर दी, काम होगा? नहीं होगा। क्यों? कि फैक्ट्स अलग है, ड्राफ्टिंग अलग होनी चाहिए थी, और हमने तो ध्यान नहीं दिया। प्लीज अवॉइड दैट टेम्पलेट प्रैक्टिस का थिंग्स। सेकेंड इज, भावनाओं में मत बहो। प्लीज डोंट गेट इमोशनल while writing. If you have got a bad day, if you have got a bad temper, घर पे झगड़ा हुआ है, बॉस से झगड़ा हुआ है, किसी से कुछ भी हुआ है, एंड यू आर लाइक आज मुझे नहीं लिखना, या आज मैं वो फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं हूं कि मैं कुछ लिखूं, मत लिखो उस दिन, अगले दिन लिख लेना। क्योंकि इमोशनल राइटिंग इज समथिंग दैट विल नेवर 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 वर्क फॉर यू or for anyone else. Attachments while writing. Now we get attached. That nahi, I love this sector. I am working in construction sector since 2012. 13 साल हो गए मेरे को एक ही सेक्टर में काम करते हुए। मुझे सेक्टर का इन एंड आउट एक्स वाई जेड सब पता है। सर अग्रीड पता है, मैडम अग्रीड पता है। बट अगर सब पता होने के बावजूद अगर आपको कम्युनिकेशन आया है, फॉर श्योर है कुछ ना कुछ तो सामने वाले को भी पता है। और आप अगर अटैच्ड हो जाओगे या तो सेक्टर से या क्लाइंट से या किसी भी पर्सन से, तो वो आपका ड्राफ्टिंग तो हर्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है हमारे पर्सनल रिलेशंस विद द क्लाइंट। अरे ये तो मेरे घर जैसा है, ये क्लाइंट मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया बदल जाए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, ये क्लाइंट मुझे नहीं छोड़ के जाएगा। क्या कोई बोलते हैं ना ये गारंटी ले सकता है दैट द क्लाइंट विल नेवर गो फ्रॉम देम? अगर नहीं जाएगा तो आपके जो भी पर्सनल रिलेशन हो फैंटास्टिक रखो, बट ऑफिस के बाहर, ऑफिस में जब आए हो, आई एम श्योर यू आर ऑल वेरी सीनियर्स देन व्हाट आई एम। तो गुस्सा आया है आपको डिपार्टमेंट से, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, केनिहाल अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो, मेरे को सारे कमिश्नर्स जानते हैं, ऑल द जेसीज नो मी, ऑल द एसीज नो मी, ये डिपार्टमेंट ऊपर से लेके नीचे तक मैं जहां पर जाता हूँ सब मुझे मेरे फर्स्ट नेम से जानते हैं, ये नया नया बंदा है। ठीक है, सब जानते हैं, सब सबको जानते हैं। अगर गुस्सा हो डिपार्टमेंट से, ऑफिसर से, प्लीज आप उसको पेपर पे मत उतारो, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी लिटिगेशन होंगे, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स देयर क्लोजर, व्हाट यू सबमिट and how you talk are the two most important things that will help. Don't take it out on paper. आप पेपर पे एकदम प्रोफेशनल रहो, बेस्ट थिंग टू डू। कभी उनका अगर ईगो हर्ट नहीं करने का, कभी उनका ईगो हर्ट नहीं करने का, दैट्स ऑल। सर ईगो अपने पास भी नहीं और उनके पास भी नहीं है, यही सोच के चलने का। अग्रेशन टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट कुछ काम का नहीं है, इट विल नॉट हेल्प। गेटिंग पर्सनल विद द ऑफिसर, अरे 2-3 ईयरिंग के बाद में तो मी एंड द ऑफिसर आर लाइक फ्रेंड्स। इट्स ओके, once he sits on that chair, please note he only has one boss, that is what the departmental instructions are. He might be my closest school friend, but if he is डायरेक्टेड कि ये ऑर्डर नेगेटिव करना है तो वो ऑर्डर नेगेटिव ही करेगा, वो ऑर्डर पॉजिटिव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाय दिस आई डोंट मीन कि आप ऑफिसर से रिलेशन खराब रखो, या बोलते हैं ना ऑफिसर आता है आप उसको गलत तरीके से ट्रीट करो, नहीं नहीं, स्टिक टू द लीगल रूल्स, बेस्ट फॉर बोथ एवरीबडी। फाउल लैंग्वेज अगेंस्ट द डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया का जमाना है, हम कहीं भी कुछ भी जाकर ट्वीट कर देते हैं, लिंक्डइन पे एक आर्टिकल पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं। अरे लिखो, क्रिटिसाइज, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट, बट एटलीस्ट लैंग्वेज का ध्यान रखो। लाइक फॉर एग्जाम्पल,
जीएसटी काउंसिल, तुम्हारा जीएसटी का पोर्टल नहीं चल रहा है, सुधारो। एक तरीका। सेकंड तरीका, डियर सीबीआईसी, कॉमा, एंटर, योर पोर्टल इज नॉट वर्किंग इन माय लोकेलिटी, कॉमा, sorry, full stop, please ask your engineers to look into the fact. You are saying the same thing, बट एक जगह पर आप बोल रहे हो कि यार तेरा चल नहीं रहा है, ठीक कर, और एक जगह पर आप बोल रहे हो नहीं चल रहा है, ठीक कर। एक ही चीज आप कम्युनिकेट कर रहे हो। हाउ विल डिटरमाइन where you hit. Now, not cooperating to the department's legal demands. आपसे डेटा मांगा गया है, आप उसे नहीं दे रहे। फाइनेंशियल ईयर 1920 का आपको बोला जीएसटीआर 1 दो, 3B दो, 9 दो, उसने मांगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो अपने लॉगिन से भी निकाल सकता है, बट अगर उसने आपको राइटिंग में दिया है और अगर आपने नहीं दिया तो वो बोलेगा आपने डेटा सप्रेस किया मेरे पे। कि सप्रेशन का मीनिंग तो वही होता है ना, दैट दे हैव आस्क्ड यू इन राइटिंग एंड देन यू आर नॉट गिविंग इट। Cooperate, but with the legal demands. If you feel that this is completely illegal, a suggestion would be get your opinions confirmed and then say that this is illegal. At least अगर आपको राइटिंग में देना है तो। Being scared, डर के तो वैसे भी कुछ नहीं होना। Using jargons. Now, if I give you a letter written by Shashi Tharoor ji, polished English, very much at a level that I am sure none of us have that good of vocabulary. आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to open up a dictionary and then you will have to first understand कहना क्या चाहते हैं वो। सिमिलरली जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो, आप लिखो अच्छी लैंग्वेज, यूज पॉलिश्ड लैंग्वेज, पॉलिश्ड इंग्लिश, बट वैसी भी लैंग्वेज मत लिखो कि सामने जो पर्सन रीड कर रहा है, ठीक है, उसको डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा ये मीनिंग है, तेरा ये मीनिंग है, तेरा ये मीनिंग है। नॉट गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्ग रन एटलीस्ट। प्लीज अवॉइड देम। I know that you can do the impossible. So when Terry Fox said it, in which year I don't know, he was surely responding or looking towards this GST communications and things that we should take care when we are drafting responses to notices. Some small social media initiatives by me on various social medias. Please feel free to follow wherever you wish to. This was all that I had to deliver from my side. Now the audience can feel free to ask me their queries, or the MCTC chambers can take up the center stage once again. Thank you. Thank you, Niyal bhai. Uh, yeah. So if any, I mean, most of the queries are asked in during the session only, and it was, of course, it was not a one-way session. So I guess there won't be any much queries now. And the thing which you shared in, I mean, the last slide, the things you should not do, that was the really, I mean, practical things. And I guess this is something which catched my eye. Before, I have not seen by any speaker, this thing is covered. So this was really a practical stuff. And I really appreciate your humble approach that हम लोग सब सीख रहे हैं साथ में. So we all are learning with GST. I mean, every day new changes are coming. See, so we all are learning. It is nothing like a speaker knows everything, or if any professional knows everything. Even officers are learning every day. So they are also, most of the things they also are not aware of the law points. So with this, I would like to invite Kavit Bhai for a formal vote of thanks. And of course, one more announcement I would like to make.
we are going to have a budget public meeting, and we have shifted recently a venue. A confirmation is awaited. So mostly we are shifting it to Goregaon Sports Club again. So that was the announcement. It is going to be held on 4th of February. So all are requested to, I mean, and also we are also going for printed version of our publication, like every year we do. And also, acha, so with this, I would like to invite Kavit Bhai uh, to have a formal vote of thanks. Thank you so much. Thank you, Jaideep bhai. Very well presented, Niyal bhai. So here on behalf of everyone here today, and on behalf of Malad Chamber of Tax Consultant, uh, I express my sincere gratitude to Niyal bhai for their insightful and inspiring presentation. It was very knowledgeable and practical session, and he has made sure that everyone is attentive and they give their responses to Nihal sir. So it is, I think, very useful nowadays to give new notices reply and the scrutinies. And I hope we will work with department and not against the department. Thank you, Niyal bhai. Thank you. Thank you, President sir. sir. President sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, we are normally talking and everything after the lecture formal. Yeah, yeah. आपका यह दायित्व है और आपका ऑब्लिगेशन पार्ट है सर जी. So don't tell the formal. It is made your formality. No, no. I mean to say word No, of that thanks. we are all using formal word Yeah, of yeah. things. अपना दायित्व है, अपने को उसका आभार मानना है. आभार का मतलब क्या है? आभार. उसने अपने पर डाला है सब कुछ, अपने सिखाया है, तो अपना दायित्व है सर अपना. तो don't say formal meeting. It is our obligation also. Okay, sir. Yes, Sorry yes. with due respect. Sorry with due respect. No, no problem. No, no, it's very much. Thank you for throwing light. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Niyal bhai. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Wonderful session it was. Really Thank you, sir. nice it was. Nice presentation and Thank you, sir. very good. Thank you so much.